Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we start with technical and daily news outlook. Facing the essential index super on a higher note, but failed to sustain those higher levels in the last hour. You could see some selling pressure from the higher side and pulling back down again to the same zone of the previous day's closing near about 19,350 odds. And if you see the Nifty is failing to sustain at higher levels, and we are seeing continuous selling pressure from that. And on a broad based perspective, you see from last 12 days, Nifty is trading in a very narrow range of 100 odd points from 19,500 to 93 to 19,450 to 19,350 or to 300 odd levels soon. So index is also we can see some time wise consolidation in those zones before a fresh breakout on the either side. And we suggest that this time wise consolidation should be used an opportunity to stay put, and we should not aggressively add positions or reduce some positions unless we don't get a breakout from these zones. Now coming to the sector specific trend, if we see in yesterday's trading session, IT and FMCG were looking good on charts, while banking stocks were witnessing some under pressure, like likes of HDFC Bank and ICICI Bank, Axis Bank on the day. However, on the other side, if you see the RSI oscillator has also turned positive, which is also indicating there is some strength in this correction. If we get near 19 to 19,300 zone, which if it does not break, so we should be using to add longs in those levels also. Now coming to the Bank Nifty, if we see yesterday, it was also constantly facing pressure near 44,500. We have again stuck below those levels to close at 44,232. And now on the other stocks, if we see IDFC Bank, PNB, Baroda were showing strength, while SBI, Federal Bank, and ICICI Bank were SBI, Federal Bank, and ICICI Bank were looking weak on charts. So now coming to the futures data, if we see there was some short covering in the Nifty 3 odd percentage points, and the PCR is also hovering near 0.9 levels only from 0.97 to 9.1. And coming to the Bank Nifty also, if we see there is some Bank Nifty futures also shown short beta to the tune of 5 odd percentage, and where the PCS switched from 0.91 to 0.61 zones. Coming to the options data front, in the Bank Nifty, 44,500 strikes have witnessed highest in the terms of call rating, which could act as a resistance, while on the support side, if we see 44,000 will be acting as a base over here. And coming to the options front for the Nifty's 19,400 strikes shows so fresh call over there, while 19,300 strike should be acting as a coming to the today's expiry. I guess expiry would be on a flattish note, and there we have seen major call ratings on the both and on the call side and put side at 19,400, 450, while on the put side 350, 300. So 100 points, 150 points would be a base for the Nifty roaming around here and there. So there could be no major fireworks coming for this expiry. Now coming to the FIR stats, FIR have also increased the shorts position by 1261 contracts. So they are net short by 24,000 odd contracts with a ratio of 45 odd percentage. In the cash market, they were net sellers by 500 odd crores, while DIs were buyers by 323 odd crores. Stocks that's looking good on charts and yesterday had given a breakouts are Rides, Indian Hotel, and BSC. Indian Hotel gave an open coverage also, so that should be used as a stock to add more longs over in those zones. Secondly, long build-ups were witnessed in Bajaj Auto, Indian Hotel, and TVS Motors, while shorts were witnessed in NTPC, Gujarat Gas, and Petronet LNG. Gift Nifty shows that it is a flattish opening for the Indian markets. Let's see, post opening we would see analyze and see if Nifty is able to sustain yesterday's lows and move ahead towards 19,400, 450 zones. So that's it from mine. I'll hand over to Archana Madam for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Natco Pharma. The company has made a strategic investment of $2 million in Delaware-based ISCA Incorporation, which had a turnover of roughly $10 million in the last fiscal year ending December 2022. The strategic investment for 5.8% stake in ISCA is for biocontrol of pest, and the company is engaged in the business of pest control for agriculture. So that bodes well for Natco's earning growth going forward. On Ajanta Pharma, the company has received US FDA approval to launch and market Topiramate extended release capsules of doses of 25 mg, 50 mg, 100 mg, and 200 mg. So this is again, positive development on the company's front. On Bharat Heavy Electricals, the company has secured an order for setting up two 800 megawatt supercritical thermal power project stage 2 at Lara in Chhattisgarh
through the international competitive bidding. The deal entails designing, engineering, manufacture, supply, construction, testing and commissioning with civil and structural work for the EPC projects. On Rail Vikas Nigam, the company has emerged as the lowest bidder for the various projects of Maharashtra Metro Rail Corporation. The total project cost is roughly 256 crores. So that is a positive development on the company's front. And lastly, some update on the IT sector. So LTMIT has curtailed the wage hikes. Many other IT companies like Infosys, Wipro, Tech are on the similar lines due to the slowdown in the revenue growth. We believe that the IT companies are now managing the margins, which could improve going forward. Hence, it's positive development for the IT sector. So that's it from my side. Now hand it over to Brijesh for further research updates. Thank you, and over to you, Brijesh. Thank you, madam. So we start with the Sula Vineyards. So the company named Berlin West Asia PT is likely to invest nearly 12.5% stake in the Sula Vineyards. This investment is anticipated to be valued at 539.2 crores and is likely to occur through a block deal. This has been reported in the CNBC on August in yesterday's session. So basically, the expected price of the block is around 473 per share, and the range would be 473 to 508. This is by the sources. Next update on the Hindustan Aeronautics, Embraer Defense and Securities is in talk with the 5 Indian entities, including the HAL and Tata Group, to manufacture the defense aircraft in India. This has been updated by the top executive of the Brazilian plane maker. The company hopes to finalize and announce its partner by the end of this year. So this is again a positive news for the HAL. Now some news on the rice. LT Foods, KRBL and Chamanlal Setia export. Recently, the government has banned the non-basmati white rice was banned on 20th July, but now due to the due to some request from the other countries, the government on Wednesday said that it is permitted to export 1.43 lakh tons of non-basmati rice to Bhutan, Mauritius, and Singapore. So this has to be kept on a watch list. Then the last update on the auto stocks, the government had decided to extend the deadline of the production PIL scheme for automobiles and auto components by another year to 27-28. Center has also decided to agree with the industry stakeholders to disburse the incentives on a quarterly basis instead of on an annual plan, as per the scheme earlier. So this was a few news updates. I will hand over to Prabhakar sir for more research updates. Thank you. Good morning, team. We stand corrected. The Sula wine is a sell thing. The investor is selling Sula wine because the lock-in period is ended. It is 15% stake sale. So buyer is unknown. LT Foods, KRBL and Chamanlal Setia will benefit from the ban removed for few countries, Bhutan, Singapore and Mauritius. Zen Technology has secured order from Ministry of Defense for 72 crores. And now the company is the provider of military training and anti-drone solution. So no, normally the anti-drone solution, Zen Technology is getting good order. We don't track the stock. NTPC has approved almost 15,530 crores investment for 1,600 megawatt Lara super thermal power, where BHEL has got the order, so which was mentioned by Archana. MTR Tech, now it gets industrial defense license from Government of India to manufacture command control computers, communication intelligence surveillance, and reconnaissance system equipment to be used for fitting submarine and other naval equipment. In defense, there are small companies like Data Pattern, MTR Tech, and Zen, where a lot of traction has been happening. So, this is something to watch out for. Fortis said it will acquire
Medar Hospital, Mansavar, it is near Delhi, for 225 crore. This hospital has 350 beds and it will be operational in the next 9 months. Now, and they have put a condition subject to all government approvals, it will be operational. Government received 32 application for PLI scheme, 20 for IT hardware, for manufacturing laptop, PC and servers. HP, Dell, Lenovo has applied for laptop. For servers, it is HP, VVDN and Lenovo. Apple was absent in everything. So, no, the number of application, if it is approved, then we can become a laptop manufacturer. Geo Finance, the media reported that Geo Finance to launch UPI service and Soundbox, a pocket-sized speaker for payment via GeoPay. This will compete with Paytm and PhonePe. Paytm is a listed company. It will have some negative impact. G20 meet is slated in the next 10 days. So whatever ground reality, most of the hotels are booked from now. So that has made Indian hotel give a breakout. It is trading at all-time high. Lemon Tree, Chalet, EIH, these are few hotels which have rallied and which have presence in Delhi or NCR region. Dreamflux, the leading company in airport launches, it has tied up with visa services to provide, collaborate, offer premium launches and doorstep visa services. I don't know what will be the impact, but something is happening there because Dreamfolks, many of the credit card companies facility given in launches. So this tie-up can compensate for that. RK Forge expands its footprint in South American market with 74 crore order win. So with that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम लोग अभी ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट है नाटको फार्मा के ऊपर. ये फार्मा कंपनी है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट $2 मिलियन की डेलवेयर बेस्ड जो है ISCA इंक उसमें की है और उनका जो टर्नओवर था वो 9.3 मिलियन था लास्ट फिस्कल में, ईयर एंडिंग दिसंबर 2022 में देखे तो. ये जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है 5.79% स्टेक जो है ISCA में, वो बेसिकली बायो कंट्रोल पेस्ट के लिए था और जो ISCA है वो एंगेज है बिजनेस पेस्ट कंट्रोल और एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है उसमें. नेक्स्ट अपडेट है अजंता फार्मा के ऊपर. अजंता फार्मा को फाइनल अप्रूवल रिसीव हुआ है US FDA से, जो लॉन्च करेंगे ऑन मार्केट में टोपरामेट एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल. डोसेजेस होंगे 25 mg, 50 mg, 100 mg एंड 200 mg. और ये जो है टैबलेट वो एक जेनरिक वर्जन होगा सुप्रीनियस फार्मास्यूटिकल इंक का, त्रोकंडी XR का, और ये अजंता लॉन्च करेंगी Feb 1st 2026 और उसके पहले भी हो सकता है सर्कमस्टेंस के अनुसार. देन नेक्स्ट अपडेट है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स के ऊपर. कंपनी को ऑर्डर मिला है जो सेटअप करेंगे 2x into 100 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 लारा छत्तीसगढ़ में, और ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होगा. और ये जो डील है वो डिजाइन करेंगी, इंजीनियरिंग करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड ये सब कमीशनिंग होगा सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क का EPC प्रोजेक्ट के लिए. देन नेक्स्ट अपडेट है IT सेक्टर के ऊपर. IT सेक्टर में जो LTI माइंड्रे है उन्होंने कल्ट किया है वेज हाइक, और ये जो मेनी अदर IT कंपनीज है उसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL टेक्नोलॉजी है, सिमिलर लाइंस पे है क्योंकि स्लो डाउन रेवेन्यू ग्रोथ में है उसके कारण. और हम लोग बिलीव करते हैं कि IT कंपनी उनका जो मार्जिन है वो मैनेज कर रही है और ये इम्प्रूव होगा आगे जाके, तो ये पॉजिटिव हो सकता है IT सेक्टर के लिए.
देन नेक्स्ट अपडेट है सुला वाइनयार्ड के ऊपर। सुला वाइनयार्ड में जो रिलायंस एशिया पेट है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो प्लान कर रही है कि डाइवेस्ट पोर्शन करेंगे उनका ओनरशिप सुला वाइनयार्ड्स में, और उसकी जो अमाउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 12.56% है। और ये डाइवेस्टमेंट है एंटिसिपेटेड है वैल्यू अराउंड 539.2 करोड़ का होगा, और ये ब्लॉक डील से होगा। ये अपडेट है रिपोर्टेड बाय सीएनबीसी आवाज के अनुसार। और ये जो एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस है ब्लॉक डील की, वो प्रोजेक्टेड है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 473 पर शेयर। और ये जो कंपनी है वो सेट करेंगे रिलीज पर शेयर प्राइस रेंज जो फॉल हो रही है 473 से लेके 508.7 है। देन नेक्स्ट अपडेट है एचएल के ऊपर। एमरे डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, वो टॉक कर रही है 5 इंडियन एंटिटीज के साथ, इंक्लूडिंग उसमें एचएल भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, जो मैन्युफैक्चर करेंगे डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया में। टॉप एग्जीक्यूटिव जो ब्राजीलियन प्लान मेकर है, उन्होंने बोला है। और ये कंपनी का होप है कि वो फाइनलाइज और अनाउंस करेंगे ये जो पार्टनरशिप है एंड ऑफ दिस ईयर तक। देन जो राइस रिलेटेड कंपनी है, उसमें एलटी फूड्स है, केआरबीएल है, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट है। उसके लिए एक अपडेट है कि गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को बोला था कि परमिट करेंगे एक्सपोर्ट 1.43 लाख टन नॉन बासमती वाइट राइस का भूटान, मॉरिशस एंड सिंगापुर को। और ये एक्सपोर्ट है वो परमिट हुआ है नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड से। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। ये एक्सपोर्ट के थ्रू नॉन बासमती वाइट राइस से जो बैन किया था 28 जुलाई को, अभी वो परमिट किया है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये बेसिकली बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई, और एक्सपोर्ट अलाव होने के कारण जो परमिशन ग्रांट की है गवर्नमेंट ने अदर कंट्रीज में, वो फूड सिक्योरिटी नीड्स एंड रिक्वेस्ट मीट कर रही है। देन नेक्स्ट अपडेट है ऑटो स्टॉक के ऊपर। एज पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो एक्सटेंड करेंगे डेडलाइन प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव दैट इज पीएलआई स्कीम की ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट है अनदर ईयर 2027 से लेके 2028 तक। बट सेंटर ने ऑल्सो डिसाइड किया कि वो अग्री करेंगे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से उनका जो डिसबर्स है इंसेंटिव क्वार्टरली बेसिस के अलावा इंस्टेड होगा एनुअल प्लान, और एज पर जो स्कीम का अर्लियर प्लान था। देन नेक्स्ट अपडेट है ड्रीम फ्लोक्स करके कंपनी है। कंपनी बेसिकली लीडिंग वीजा रिसीव प्रोवाइडर है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है। तो वो ऑफर करेंगे प्रीमियम लॉन्जेस एंड डोर स्टेप वीजा सर्विस। देन आरके फोर्ट जो कंपनी है, वो उनका जो फुटप्रिंट है वो एक्सपांड कर रही है साउथ अमेरिका में। देन T20 के अभी मैचेस होंगे, तो मोस्टली होटल्स जो है वो काफी सारे बुकड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग लास्ट 2-3 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि होटल स्टॉक में रैली आ चुकी है। उसमें इंडियन होटल में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है कल। लेमन ट्री है, शैले होटल है, EIH होटल है। और ओवरऑल ये होटल्स का जो प्रेजेंस है वो दिल्ली और एनसीआर रीजन्स में है। तो ओवरऑल एक आप होटल स्टॉक के ऊपर वॉच आउट कर सकते हो। जियो फाइनेंस जो कंपनी है वो लॉन्च करेंगी यूपीआई सर्विस पेमेंट, और वो जो साउंड बॉक्स रहता है वो, तो ये compete करेगा पेटीएम और फोन पे के लिए। ये मीडिया का रिपोर्ट के अनुसार है। देन फोर्टिस जो कंपनी है वो अक्वायर करेंगी मेडर हॉस्पिटल अराउंड 225 करोड़ वैल्यूएशन पे। और ये उनका जो ऑपरेशन होगा वो नेक्स्ट 9 मंथ्स में होगा, इंक्लूडिंग उनका जो भी अप्रूवल वगैरह है वो। देन एम्टार टेक्नोलॉजी है, उनको ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से जो फिटिंग करेंगे, बेसिकली सबमरीन रिलेटेड है। तो हम लोग देखें तो जो डेटा पैटर्न है एम्टार टेक्नोलॉजी है, ये जो डिफेंस रिलेटेड डेटा रिलेटेड जो कंपनी है वो फिलहाल अभी ट्रैक्शन पे है। तो ये स्टॉक को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। एनटीपीसी जो कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है रारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का वो मिला है। देन सुला वाइनियर का जो 15% स्टेक सेल होने वाला है, उनके जो स्टेक सेल का जो पर्सन है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम आर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।